How old is your friend? My friend is 30 years old. How old is your maternal uncle? My maternal uncle 35 years old. How old is your maternal auntie? My maternal auntie is 65 years old. तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड टीचर्स। और आज मैं बताऊं कि आप प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमारे बच्चे जो हमारी टॉपिक था कि माई हिंदी एंड योर इंग्लिश, यानी हम हिंदी बोल रहे थे, अब बच्चे उसका इंग्लिश बता रहे थे। आज जो होगा ना, आज की टॉपिक है इंग्लिश टू इंग्लिश, माई इंग्लिश एंड योर इंग्लिश, यानी दोनों हम भी अंग्रेज बनेंगे और आप लोग भी अंग्रेज बनेंगे। क्योंकि होता क्या है कि अब बच्चे को आज हम टॉपिक पढ़ाते हैं, मान ली उम्र पे टॉपिक पढ़ाते हैं, तो पहले तो बोर्ड पे ट्रांसलेशन बनाना सिखाना होता है, फिर उसको कॉपी में बच्चे बताते हैं और कॉपी में बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाते हैं, फिर हम लोग उसको चेक करते हैं, फिर उसको क्या होते हैं ना कि हम लोग क्लासरूम में प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चे बोल पाते हैं कि नहीं, तब लास्ट में हम उनको कन्वर्सेशन में लाते हैं, तब वार्तालाप में लाते हैं। तो एक के टीचर्स को बच्चे में ये सारी चीज़ डालने के लिए काफ़ी मेहनत करना होता है। ये बात नहीं कि अचानक आपका बच्चे हमसे यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अचानक नहीं होता है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है ना। चाहे दुनिया का कोई काम हो, काम जब दिखता है तो बहुत आसान लगता है, मोबाइल ही है बहुत आसान है, लेकिन बनाने वाले कितने साल मेहनत करते हैं। एक फिल्म है, फिल्म तो दिखता है बट फिल्म को बनाने में कितने साल लगते हैं, कितने लोग होते हैं, है ना। सिमिलरली ये जो टॉपिक पे बातें कर रहे हैं तो इसके पीछे भी मेहनत होते हैं, बहुत चीज़ों को बच्चे लोग को एक एक चीज़ बताना पड़ता है, तब जाकर कन्वर्सेशन के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हैं? yes, हम करेंगे कुछ नहीं, हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे और आप आंसर, यानी माई इंग्लिश एंड योर इंग्लिश, और टॉपिक वही होगा उम्र का, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग? yes. तो चलिए आज का जो पहला सवाल आपसे, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू? I am 30 years old. हाँ, क्लैपिंग क्लैपिंग, वेरी गुड। हाउ ओल्ड इज योर फादर? My father is 35 years old. हाउ ओल्ड इज योर मदर? My mother is 30 years old. हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर? My brother is 8 years old. हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर? My sister is 10 years old. हाउ ओल्ड इज योर अंकल? My uncle is 30 years old. हाउ ओल्ड इज योर आंटी? My auntie is 45 years old. हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर? My grandfather is 65 years old. हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडमदर? My grandmother is 65 years old. हाउ ओल्ड इज योर सन? 10 years old. माई सन इज 10 years old. My 10 years हाउ ओल्ड इज योर डॉटर? My daughter is 12 years old. हाउ ओल्ड इज योर फादर इन लॉ? My father-in-law is just 65 years old. हाउ ओल्ड इज योर मदर इन लॉ? My mother-in-law is 65 years old. हाउ ओल्ड इज योर स्टीप फादर? My stepfather is the 85 year old. 85 years old. हाउ ओल्ड इज योर मैटरनल अंकल? My maternal uncle is 32 years old. हाउ ओल्ड इज योर मैटरनल आंटी? My maternal auntie is 35 years old. हाउ ओल्ड इज योर यंगर ब्रदर? My younger brother is 12 years old. हाउ ओल्ड इज योर एल्डर ब्रदर? My elder brother 10 years old. हाउ ओल्ड इज योर यंगर सन? My younger son is 10 years old. हाउ ओल्ड इज योर स्टीप मदर? My stepmother is 35 years old. हाउ ओल्ड इज योर स्टीप फादर? My stepfather is 65 years old. हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर इन लॉ? My brother-in-law is 35 years. हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडसन? My grandson is 13 years old. हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडडॉटर? My granddaughter is 65 years old. हाउ ओल्ड इज योर मैटरनल ग्रैंडफादर? My maternal grandfather is 65 years old. हाउ ओल्ड इज योर मैटरनल ग्रैंडमदर? My maternal grandmother is 75 years old. हाउ ओल्ड इज योर फ्रेंड? My friend is 14 years old. 14 years old. हाउ ओल्ड इज योर यंगेस्ट ब्रदर? My youngest brother is 80 years old. हाउ ओल्ड इज योर eldest sister? My elder sister is 15 years old. हाउ ओल्ड इज योर sister in law? My sister-in-law is 70 years old. 70 years old. How old is your auntie? My auntie is the 30 year old. How old is your step brother? My step brother is 62 years old. How old is your step sister? My step sister is 35 years old. How old is your friend? My friend is 12 years old. How old is your grandfather? My grandfather is 65 years old. How old is your grandmother? My grandmother is 45 years old. How old is your step son? My stepson is 50 years old. How old is your stepdaughter? My stepdaughter is 65 years old. How old is your friend?
My friend is 30 years old. How old is your maternal uncle? My maternal uncle 35 years old. How old is your maternal auntie? My maternal auntie is 65 years old. How old is your nephew? Nephew is 8 years old. 8 years old. How old is your niece? My niece is 10 years old. Oh, right. Definitely, you watched all the student my class, especially all students belong to the art class. You can watch the. I will ask all question in English medium, and the all student will give answer in English medium. Because of I think how will possible? Every work is possible. I think you will be work on the students. Definitely, a student have a lot of capacity to learning. स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सीखने की शक्ति होती है, बस एक टीचर को चाहिए कि आप कितने अच्छे टेक्निक से आप बच्चों को सिखाते हैं। आज बच्चे देखिए बहुत अच्छे आप सीखे।